ओके। तो अब हम करने वाले हैं आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की मीनिंग अगर हम देखें, सबसे पहले ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स के कारण होती है। ये सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? इट मीन्स द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। डेली लाइफ में जिसको हम कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। तो इसको डिफाइन अगर हम करें तो हम डिफाइन ऐसे करते हैं। The phenomenon of non-uniform distribution of energy in the medium due to superposition of two light waves, right, is called interference of light. अब इसमें इंटरफेरेंस के अगर डेली लाइफ एग्जांपल देखें हम, तो कलर्ड सोप बबल जो होती है, या अगर फ्लोर पे हम ऑयल डाल दें थोड़ी और उस पे सॉरी गीली फ्लोर पे अगर ऑयल डाल दें तो अगेन जो कलर फिल्म से दिखती है, तो ये सब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एग्जांपल है। अब इसमें वेरी सिग्निफिकेंट विच इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये हमारी स्क्रीन है और स्क्रीन के पास में दो नैरो स्लिट है, और नैरो स्लिट से हटकर वो एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक, जिसमें सिंगल कलर की लाइट है। इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स से जब लाइट चलती है तो इट passes through these two narrow slits, and these two narrow slits behaves like coherent sources of light। और ये कोहेरेंट क्या होती है? जिससे वेव निकलती है जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ऑल्सो फेज डिफरेंस या तो जीरो होती है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होती है। एंड व्हेन दे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो वी शो लाइक दिस, ए क्लियर आर्क और डॉटेड आर्क। क्लियर आर्क का मतलब है कि क्रेस्ट ऑफ वेव्स, डॉटेड आर्क का मतलब है ट्रफ ऑफ वेव्स। तो व्हेन इन द मीडियम where comes at the screen, on the screen, with respect to this point O, right? So this is D1. Similarly, where two troughs will meet, bright bands will be formed. इस तरीके से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड की फॉर्मेशन होती है स्क्रीन पे। डार्क ब्राइट बैंड के कारण जो स्पेस स्क्रीन पे जो बैंड मिलती है ब्राइट, इसको हम ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई जहां पे दो क्रेस्ट या दो ट्रफ मिक्स होती है, मिलती है, और जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और वो उसके कारण से डार्क बैंड की फॉर्मेशन होती है। इसको हमें मैथमेटिकली समझना है और देखना है। थियोरेटिकल इतना समझ लें तो बहुत है। अब अगर हम इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि लेट y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b ले लेते हैं, b sin omega t। लेट से फाई की फेज लैग है, दोनों में फेज डिफरेंस है। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव yr will be y1 plus y2. Then we have this yr as a sin omega t plus b sin omega t plus phi. Now let's expand this sin a plus b से। if you expand तो ये a sin omega t as it is plus this becomes b sin omega t into cos phi plus b तो दोनों में कॉमन ही रहना, b sin a cos b cos a sin b, so it will be cos omega t into sin phi, राइट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि वाई आर, अगर हम साइन ओमेगा टी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे a प्लस बी कॉस फाइव बन जाएगा, a प्लस बी कॉस फाइव एंड साइन ओमेगा टी इज कॉमन, और ये एज इट इज विच इज प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब इसमें हम कुछ लेट करते हैं। a प्लस बी साइन ओमेगा टी को हम r साइन फाइव लिख लेते हैं, एंड b कॉस ओमेगा टी को r cos फाइव लिख लेते हैं। मीन्स इसको अरेंज कर लेते हैं। We can write this as yr is equal to a plus b sin omega t into cos phi,
So let's once again start from beginning. Y1 is A sine omega t, Y2 is B sine omega t plus phi. So as per superposition, YR is Y1 plus Y2. So YR becomes A sine omega t plus B sine omega t plus phi, which means if you expand sine A plus B, so this sine A sine omega t plus B sine A cos B, cos is sine B. Which means if you take sine omega t common, we get YR as A plus B cos phi and B cos omega t sine phi. Now, in place of this A cos A plus B cos phi, we are substituting R cos theta. And B sine phi, we are substituting R sine theta. Thus, it becomes YR as R sine cos theta into sine omega t plus R sine theta into cos omega t. And thus, it becomes R आइडेंटिटी लगा दी sin A plus B sin omega t plus theta. ऑल्दो ना बस इसके बाद कुछ फॉर्मूले आएंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट है. वो क्या हो सकता है? तो यहाँ जो हमने नंबर 1 दिया है 1 एंड 2, इसको स्क्वायर और ऐड करके हम कुछ सिग्निफिकेंट चीजें फाइंड करेंगे. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. Squaring and adding equation 1 and 2 we get. So what we'll get? Let's see. Because in RHS, R square can be common. So within the bracket, we have sine square theta plus cos square theta. RHS में it will be A square plus B square cos square phi plus 2AB cos phi plus B square sin square phi, which means B square common, and this sin square cos square theta is 1. R square, it becomes A square plus B square into sin square theta plus cos square theta plus 2AB cos phi, which means again we have this sin square theta plus cos square theta 1, and therefore R square is A square plus B square plus 2AB cos phi, and this is the new equation what we are getting, and R is the resultant amplitude of superimposing waves, and A and B are the amplitudes of individual waves, right? Now we can convert it, we can find some other way of writing it. What could be that? Let us see. Now we know theoretically that intensity of superimposing waves is directly proportional to square of amplitude.
which means IR can be KR square. Since K is 1 in SI unit, right? Similarly, for individual waves, I1 can be A square and I2 can be B square. Therefore, we write this equation as IR is equal to I1 plus I2 plus 2I1 I2 under root of cos phi. So again, different format for this equation, which is fourth in terms of intensity. Now, if we want to find something more in this, और हम नई चीजें इसमें कुछ फाइंड कर सकते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। अगर हम कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या हो सकती है, अभी देखते हैं। सो फर्स्ट क्या लें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं या बैंड्स भी बोला जाता है। तो ये फाइंड करने के लिए हम, और इक्वेशन में हम देखते हैं, क्योंकि cos फाई है, तो cos फाई +1 चाहिए हमें, मीन्स फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई and so on. Therefore, we write phi as 2n pi, where n can be 0, 1, 2, right? हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस phi is equal to 2 pi upon lambda into path difference, let's say x. If we equate it with this 2n pi, then what we get, this 2 pi is cancelled, and therefore we get x as n into lambda, and this becomes condition for constructive interference, that the x represent path difference. Path difference must be n times of wavelength. Similarly, let's have for destructive interference. For destructive interference, it means, because in formula we have cos phi, so cos phi should be -1. तो यहाँ पे ये दिस वाज 0 छोड़ दें अगर, तो इवन नंबर्स था, यहाँ पे ऑड होएगा, which means this can be 0, 3 pi, 5 pi and so on. So no, sorry, not 0, 3 pi, it should be pi, right? And 3 pi, 3 pi, 5 pi. Therefore, if you generalize it, phi as, it can be 2n plus 1 pi, right? Similarly, if you do this phase difference,
the phase difference 2 pi upon lambda into x can be equated with 2n plus 1 pi. So what we get, this pi and pi gone, and therefore what could be this x? 2n plus 1, lambda will go there. So 2n plus 1 lambda by 2. This is lambda by 2, and this is the condition for मिनिमा, जिसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं, इसको डार्क फ्रिंज भी कहते हैं डिस्ट्रक्टिव को। तो याद रखना है पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट बैंड एन लैम्डा, path difference for dark band is 2n plus 1 lambda by 2. Now we can have few more results in this, which could be like this. Now if you find I max, it could be, we have I as a square plus b square plus 2ab cos theta, and this cos theta should be 1, so I max would be a plus b whole square. Likewise, we can have I min, it will be a square plus b square plus 2ab cos theta. So min ले रहे हैं तो cos 0, cos 180 rather, तो cos theta should be -1. So I min will be a minus b whole square. Therefore, if we take ratio of these two, so what we get? I max upon I min, it will be a plus b whole square divided by a minus b whole square. Right? Again, one very significant point, this one. And then we can have a ratio of intensity in terms of source. तो सोर्स के टर्म में अगर हम बात करें तो ये कहते हैं I1 upon I2, it can be W1 upon W2. W1, W2 are the width
of slits. ये भी एक रिलेशन हो गई. If we relate it with this amplitude, because this can be I1, this can be I2. So I1 upon I2 can be A square upon B square, can be equated with W1 upon W2 if required. तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें. And if you take average, so what could be the average value of intensity? So let's see average. I average can be I max plus I min divided by 2. So I average can be A plus B whole square plus A minus B whole square whole divided by 2. If we expand, we'll get A square plus B square plus 2AB plus A square plus B square minus 2AB whole divided by 2, which means 2AB will go, and I average is this A square, 2A square and B square. So 2 can be common, A square plus B square divided by 2, and therefore we have this 2 gone. I average is A square plus B square, which can be I1 plus I2. Average value is direct I1 plus I2, जबकि इंटरफेरेंस के अगर रिजल्टेंट लेते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और I average can be I1 I2 plus 2 I1 I2 root 2 cos phi. तो रिजल्टेंट में I1 I2 के साथ 2 under root I1 I2 cos phi. That is additional factor called interference factor. और इसमें एक और चीजें हम कर सकते हैं, जैसे जब हम लिखते हैं कि IR एच I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi. Now let's say कि I1 I2 is I, तो IR can be 2I plus 2, this is I1 I square under root, this is again 2I cos phi. So IR is now 2I can be common, 1 plus cos phi. Now identity हम जानते हैं 1 plus cos phi can be 2 cos square phi by 2. So IR becomes 2I multiplied by 2 cos square phi by 2, and therefore we write this IR as 4I cos square phi by 2. This is very significant formula, that we also write it, a resultant is 4I naught cos square phi by 2. तो मैक्सिमा जो होती है वो 4 टाइम्स होती है इंडिविजुअल की.
और मिनिमा तो 0 ही होती है, जिसको हम ग्राफ से भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। होप मैं आपकी hit like button, subscribe it and share it with your friends, and please do give your comments. Thank you so much.